and Representation of People Act is a very technical thing, and a lot of issues keep on evolving. So most probably we'll be doing 2 questions or 3 questions. The first question that we will be doing is on the model code of conduct. Okay. And what question was asked? The question asked was, examine the role of election commission in the evolution of model code of conduct. Okay. So how model code of conduct is evolving. Question number 3 we will discuss. The role of election commission in India in light of the evolution of model code of conduct. So we need 2 things: the clarity on model code of conduct, and then how model code of conduct has evolved and what has been the role of election commission. So if we give a cursory glance on the role, fine, what we see that from a institution which enjoyed lot of respect to the institution which is circumspect now, and the neutrality of the institution is coming under question, and there has been a considerable decline or criticism of institution of election commission to begin with in 2019, but in a big way in 2024 elections, okay, where there has been the blatant, you can say, completely disregard of model code of conduct, and election commission was found giving the arguments and logic which were not very digestible, putting a big question mark on the credibility of the institution itself. And again, in the recent elections, as one of the study published in Times of India, that between 7th January to 25th January, there have been more than 700 cases of violation of the model code of conduct, and consequently there has not been any action which actually makes the existence of this model code of conduct worthwhile. Now, why not actions? So first of all, it is as such a model code of conduct. Because it is a model code of conduct, it does not have the statutory basis. It is not a law. And since it is not a law, then the punishment, etc., is not possible. But it is not a question of absence of law. It can be more a question of rather than law, but an intention.
because under the Constitution, Election Commission enjoys huge scope, vast powers to take lot many actions. And along with this story is also the another debate that has come into picture about the nature of the institution, how autonomous the institution is. So presently the way model code of conduct politics is being done is raising more questions than providing answers, and it compels us to take up the wider issues. So the wider issues end up being addressing the election commission, understanding its own weaknesses, and so we will discuss that part along with, again, every question that you will see in polity, even if one topic, each question is linked to another question. So the other question which is linked to the role of this thing is this particular question: to enhance the quality of democracy in India, Election Commission has proposed the electoral reforms in 2016. What are the suggestions made and how far they are significant to make democracy? So in 2016, lot of reforms were proposed, and they have also been put on Election Commission's website. So this is most formal. There are a lot of reforms, but the biggest issue in electoral reforms is obviously the money power and muscle power. And use of money and muscle power is also linked to your model code of conduct. So, for example, candidates are being accused of using different ways to induce the voters to vote or not to vote. And again, the intimidation, the use of muscle and money power, and these two are interlinked. And just like judiciary number of times talked about CBI and other institutions as caged tigers or caged pigeon, so this is how the impression is also there. So one question is all linked with the other question. In this context we will see. अब इसमें money and muscle power. So there is one scholar, Milan Vaishnav of Carnegie Foundation. He has written a book on Indian elections where crime pays. Fine. So where crime pays is based on the Vohra Committee recommendations report, which tells about the nexus between the money and muscle power. And crime pays means if you have a criminal background, the chances of winning increases. And how criminals enter, when criminals enter, then obviously the criminal money also enters. Fine. So these are certain problems of Indian elections, after elections, and that puts a big question mark on the credibility of India's electoral process. So when we talk about democracy, democracy in India, as I always tell, has to be taken more seriously than any other country. Why? Because democracy in India is not just a way to change the rulers. Democracy is also the strongest weapon in the hands of the poor. Fine.
to use their power to change their life chances. And India's democracy, India being mother of democracy, so the responsibility of India does not end with Indian citizens, because India's democracy and experiment has a demonstration impact on other countries. So you have to understand the responsibility. Okay. And again, elections is a means by which citizens' formal engagement with the democratic process begins. And then from 1967 onwards, when 1967, this particular year is important because this is the year recognized as the breakdown of Congress system. Fine. So breakdown of Congress system or the end of the hegemony of one party. So once hegemony ends, then the competition becomes all the more fierce. Fine. So as competition becomes fierce, then the role of money and muscle power increases. And this phenomena begins from 60s onwards, and lot of unethical and even illegal practices from booth capturing to intimidation started. And that is why in the decade of 60s, and specifically in 1960 itself, the concept of model code of conduct came, and first time this was introduced in Kerala. इसको जरा ठीक करना. So it was an initiative of the government of Kerala, and they created, the state administration has created a voluntary code, and they consulted with the political parties in the state to ensure that elections remain peaceful and harmonious, and they do not impact the harmony and the law and order situation. And Kerala being one of those states in India which are higher in terms of literacy and all, it worked. And then this experiment was in 1967. It was taken by election commission in case of other states. So gradually a model code of conduct. Fine. So there is a time frame, you will understand, that model code of conduct, but it actually started more as a moral code of conduct. Fine. Where the appeal has been based on ethical considerations, and gradually this moral code of conduct, don't write, first understand the story. Fine. So this started in 1967 election, and from 67 to 1969 the process of formalization started. So in the first phase, you can say from moral, it entered into the direction of becoming model. Okay. So model means just like you have a model Panchayati Raj, fine, and other states can align their panchayats to that. So from moral to model, the distinction is formalization. Rules are becoming more clear.
Okay, and then in the decades of 70s, fine, how the progress, not just moral and model, it should also take some effective role. It should start making some change. Okay, so start making some change in the elections. It can be done only in partnership, means civil society, like institutions like ADR, PUCL, approaching to judiciary, and when civil society has also strengthened election commission, so election commission and civil society forming at a team, as a team, approaching to judiciary, and judiciary is strengthening the nature of the model code of conduct, and something which is just a set of principles, because the decisions of judiciary, they started taking the binding norms. And again, model code of conduct is a work in progress, in the sense that consistently we are learning, and then lot of changes are happening in model code of conduct. Okay, so in the decade of 70s, parties have actually started raising this particular issue, that often the electoral process in India as well as in elsewhere, those who are in power, party in power, gets advantaged, and thus a model code of conduct has been specifically framed and incorporated certain features which are focusing on the restrictions on party in power. So right now the model code of conduct has 8 parts. Okay, initially 6 parts. Now the 7th part of the model code of conduct deals with the party in power. Now from the day model code of conduct part 7 came to deal with the party in power, it started creating, it started making them uncomfortable. Fine. And the tussle started between the election commission and the ruling parties, both at the union level and at the state level, because they started finding model code of conduct too restrictive. Now what else happened in 70s? To give certain teeth and to develop certain trust in the model code of conduct, election commission has started the process of having election observers. So observers are appointed at different polling booths,
and otherwise observers are appointed to just track whether political parties are following the model code of conduct which they have voluntarily agreed. App e-vigil. So that app means technology also has been incorporated, and the steps like appointment of the election observers, this has also taken place. But at the same time, we see the tensions are also emerging. So in 90s has been a turning point in the electoral politics in India, in evolution of institutions in India. First of all, 90s means more fragmented era of coalition era. So when coalition era comes, the politics becomes more adversarial, more competitive, then more criminalization, and criminalization includes the criminal money also. And somehow in 90s, election commission was also headed by TN Session. Fine. So we were just studying in political science how people shape the institutions and how institutions shape the politics. So under TN Session, election commission became a institution otherwise like which got visibility, which captured the imagination of the people. Otherwise, election commission, nobody was so much, it was not coming into our imagination. Okay, and there is a role of TN Session in further strengthening the model code of conduct. And 90s is the year, 90s is the decade when judiciary is also coming to play, because 90s is a decade of various type of activism in India, as the main institutions of governance like parliament and executive is in the decline and balance of power is the rule. So what we see, judicial activism, civil society activism, and the activism of election commission also. So one very important step taken by TN Session to strengthen strengthen the model code of conduct was that he held that from the very day elections are announced, there is a difference between the day of announcement of elections by the election commission and the date of notification. So this was the first case which has brought the judiciary also into this picture. Fine. So he wanted to further shorten the duration, means government would like duration of restriction should be shortened, and election commission in its zeal to further make the process more credible, because that is election commission's power under and expectations of the role under Article 324. They have supreme power with respect to superintendent's direction and control, and this power is so big that under Article 329 even judiciary is excluded, and election commission enjoys vast quasi-judicial
powers. And this was the case, and this case first came in Punjab and Haryana High Court. So model code of conduct coming into picture is basically act of restraint on the political parties, fine, and ethical restraint on them. And since it is voluntary, they should be observing it. So the case could not be resolved in Punjab and Haryana High Court. It went into the Supreme Court. And in Supreme Court, the case remained pending, and government and election commission, they arrived at the golden mean, means both came to one position of consensus, and it was decided that model code of conduct will come from the date of announcement. However, the gap between the announcement and notification should not be big gap. ठीक है? So गवर्नमेंट की भी बात और इलेक्शन कमीशन, तो एक कंसेंसस आ गया 3 weeks, not more than that, fine. And this is how this matter has been resolved. Along with this, the ruling parties, they raised this issue that when elections come into picture and when model code, so suppose elections are happening in one state, but model code of conduct is applicable only for that state or entire country? Entire country, because the party politics. So the question was, why governance has to be suffered? Fine. So again, a way out was formed, and the way out was that in case you have to make certain inaugurations, then not by the politicians and the ministers, civil servants can do that. Plus, election commission has shown enough sense of moral reasoning, and election commission has proposed that in case of certain ministries like Ministry of Finance or some other ministries, if it becomes very essential to bring certain policies, certain new measures and law, it can be done with the permission of election commission, because during elections, election commission becomes a very powerful authority, fine. So you can call it permission, they use the term permission, but you can understand in consultation or keeping election commission in confidence. Okay, so this is how election commission has tried to strengthen and add credibility to the model code of conduct. Then election commission, because what we study in political science, when you study Hobbes, what Hobbes says, covenants without swords are nothing but words. So it's a model code of conduct, and since it lacks the statutory basis, it lacks the binding impact. So there was a time when election commission proposed that it should be given the statutory basis to further discipline the political parties. And in Lok Sabha, a bill was also introduced, and the government of that time, they also agreed, and bill was also introduced
but because Lok Sabha got dissolved, so bill got lapsed. But later on, the approach has changed. Like today, Election Commission doesn't favor the statutory basis to the model code of conduct. The reason being, if it is not statutory, then there is a lot of scope for flexibility, and you can come up with the new directions looking at, just like in the case of basic structure. So here, if we will keep it open-ended, then according to the emerging scenario, you can bring new measures, and Election Commission can take more prompt action, because we all know that judicial process, it takes lot of time, okay, and then rigidity come, and then you will make model code of conduct, and then people will always find, you bring a law, people will always find out the ways to flout the laws. So keep it open-ended has also been a logic. So right now, Election Commission does not favor giving it a statutory basis. You can question, you can say that maybe the Election Commission is not independent and autonomous, but we don't have to enter into politics, but this is the logic they have given, and perhaps this is the approach of the Constituent Assembly also. Like during the time of elections, Election Commission gets vast powers, and again, even in the existing system, it's not that there is a dearth of such provisions in the existing electoral laws. That includes Representation of People Act. The Representation of People Act also involves certain electoral offences, and for that, judiciary can take the actions. So for the serious matters of violation, there is enough scope in the existing law, and there is not much requirement to give it a statutory basis, because ultimately no law is good or bad. Ultimate solution lies in ethics only. Fine. So people, you keep on coming up with the laws, people will keep on finding the loopholes of the laws. And again, it is not enough. The big question is not we are giving some formal legal basis. The big question is that there are bigger issues which have an impact on the transparency and fidelity of the electoral process. So it should not happen that we should get lost in not so significant issues, because the bigger issue is the criminalization and the use of money power. So often we get lost in the wood, fine, because of the chaos, and we start emphasizing on something which is more simplistic, but that is not the root cause of the problem. Now, what else has been happening in the model code of conduct? As electioneering is changing, electioneering and campaigning is also a dynamic process. Fine. So now the new issues like technology, media, fine. So these things have also emerged, and as the color of, you can say, the campaigns and their nature is changing, so the model code of conduct is also evolving,
and from time to time changes have been made. And one important change is inclusion of part 8 in the Model Code of Conduct, which is based on Supreme Court's direction. Okay, so there is a case of some Subramaniam Balaji case, where Supreme Court has given a direction with respect to the freebies that is being promised. And Supreme Court held that political parties will also have to tell, like the freebies which you are promising, what is the source, how are you going to fulfill that promise. And then Supreme Court directed the Election Commission to ensure that political parties, they include this in their manifesto, and thus part 8 of the Model Code of Conduct emerged. And then in 2019 another evolution has happened, and by this time lot of, you can say, nature of the political discourse in India has changed because of excessive use of religion and these type of things. So in 2019 Election Commission, that time Ashok Lavasa was the Election Commissioner, and he directed that political parties have to ensure that in their manifestos they will not include, or they have to be stopped from including those type of issues or the agenda which are in contradiction with the constitutional ideals. So that was the next change that Election Commission has attempted in the Model Code of Conduct. Now, with respect to the Delhi elections recently, another new direction has been issued by the Election Commission, and that is with respect to the AI issue, because deep fakes and these things have started. So there was a demand that Election Commission should stop, should ensure that political parties should not be using these AI and these technologies in campaigning. But Election Commission has brought again a middle path approach, where Election Commission has issued the direction that you can use AI generated ads, etc., but you will have to mention that it is related to AI. Now this is one part of the story, the role of Election Commission in evolution of Model Code of Conduct. Besides, Election Commission from time to time it keeps on taking lot of measures to implement the Model Code of Conduct and to ensure that parties like remain transparent and voluntary. So this is the story of the Model Code of Conduct, and from moral to model, from model the debate has been it should become legal, but again it has come back to this debate is settled in context of Model Code of Conduct. So you have understood this, the story. Any question? Current is, it is model only. It is not enforced. And why not enforced? The argument is flexibility. Because once you will bring the law, then you know law, then it becomes lawyer's paradise. And this will create a problem in taking the prompt action and according to the situation. So in political science we study Plato and Aristotle, where Aristotle believes in law, rule of law, but Plato says that law comes with rigidity.
So hence always whenever you will make law, there is always a scope for the action by the humans, because you can't visualize all possible scenarios. Okay, so because political uncertainty, campaigning, you don't know na, they will change the campaigning, and then what will happen, first you have to bring the law. तो एक बार लॉ आ गया, उसके बाद कैंपेनिंग का फॉर्मूला बाद में ले आए, तो फिर वो आउटडेटेड हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा. तो ऑल आईज आर अल्टीमेटली ऑन इलेक्शन कमीशन. ठीक है, तो अब सब कुछ इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कितने ऑनेस्ट टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन है. जैसे इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ committed bureaucracy or neutral bureaucracy. So if bureaucracy is to be committed, it can be committed only towards the constitution. You are not expected to be committed towards the party in power, because the very idea of elections is to establish, the very idea to have this is to establish the level playing field. The level playing field goes when bureaucracy becomes committed. Okay, so that is the theory. Any question? Yes. Today what they say? आज फिर बोला उन्होंने. अच्छा, this is what I am explaining. जो लॉजिक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे लगता है, वही इलेक्शन कमीशन के इस इशू पे भी लगता है. क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन कर दोगे तो उसको छोड़ के वायलेट करने लग जाएंगे. हाँ, हाँ वही तो कह रहे हैं कि जैसा इमरजेंसी सिनेरियो होगा तुरंत आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉ है तो आप फायर फाइटिंग नहीं कर पाएंगे. यस, यस, तो आपको सिनेरियो मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखनी है. You can't trust anyone. Though law says government is a trust, but you can't trust anybody. ठीक है, सभी वायलेट ही हो रहा है. पॉलिटिक्स एथिक्स है नहीं, इतना इमोशनल नहीं होना है. हमें देश का कुछ चेंज थोड़ी करना है, हमें बस ये समझना है कि कहाँ क्या हो रहा है. तुम देश में परिवर्तन लाने का काम क्यों करने लगते हो? क्वेश्चन है और क्वेश्चन के इश्यूज को समझना है. तो परिवर्तन लाना अपना काम ही नहीं है. ठीक है, चले. So you can put a question mark that maybe there is something wrong, fine, but you can also look it in a positive way that you can't stop. As election commission in 2019 elections also held that they can't control the social media. So you can't control, no one can control anything. The control is always self control. ठीक है, तो अगर कंट्रोल होता है तो कानून में कोई कंट्रोल नहीं होता. कंट्रोल तो सेल्फ कंट्रोल होता है. अगर आप गलत नहीं करना चाहेंगे तो गलत नहीं करें. अगर आप गलत करना चाहेंगे तो कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से थोड़ी बड़ा है. कर लेंगे, आप ढूंढ लेंगे रास्ता. तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है. प्रॉब्लम लाइज इन एथिक्स. ठीक है, तो जब भी आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें,
एनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यू आर टॉकिंग अबाउट, उसके आंसर में अपना पूरा थीम लिख दें। हर चीज का हम एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। क्या है पॉइंट? एथिक्स। तो ऐसे ही थोड़ी हम गांधी को मानते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो एथिक्स में ही है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कई लोग होते हैं उनकी हैबिट होती है, कॉपी मिलती है ओम गणेशाय नमः लिखते हैं, है ना। तो ओम गणेशाय नमः लिखना बंद करो, उसमें यूपीएससी नंबर काट लेती, ठीक है। तो गणेशाय मतलब भगवान, भगवान मतलब रीजन, रीजन मतलब एथिक्स। तुम स्मार्ट हो जाओ। गणेशाय नमः थोड़ा मॉडर्न टाइम्स में लिख दो, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ सिन। हर पेज पर वही आपका इंट्रोडक्शन है और वही आपका कंक्लूजन है, ठीक है। भगवान को भी नाराज नहीं करो, भगवान से कह दो थोड़ा लैंग्वेज ही तो बदल रहे हैं, भावना तो भगवान समझ ही सकते हैं, है ना। गणेश जी भी है वहां पे और एथिक्स भी है, थोड़ा क्लेवर लाइक फॉक्स, ठीक है। हर पेज पे यही लिख देना, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स। 7 कॉपी, जैसी कॉपी मिले क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले 7 सिन लिखते जाओ, है ना। तो एकदम वो लोग समझ जाएंगे कि यही तो वो बच्चा है जिसकी हमें तलाश है, और इसका एथिक्स मतलब ये लिखता जा रहा है। ऐसे लोग तो चाहिए। तो इतना कर लेना, तो हर चीज तुम खास कर है, ठीक है। तो क्या what is ethical is what is right. What is ethical is what, when you do something and your soul doesn't feel pressure, that is ethical. So it's not subjective. Your soul tells what is ethical, ठीक है। soul means Krishna. Krishna will tell you na what is ethical if you want to listen to him. You can't say what is ethical will vary from person to person. Reason vary from person to person. How much you reach to ethics doesn't vary. Ethical तो ethical ही है, और जो rational नहीं है उससे ethical की उम्मीद भी नहीं है। In order to be ethical, one has to be rational. अब ये खत्म करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी है, हमें देश को बदलना नहीं, ठीक है। हाँ, यस। नहीं तो वो ऑलरेडी है ना, वो तो ब्यूरोक्रेट्स ही है। नहीं, आप एक अलग से सर्विसेज थोड़ी बना सकते हैं, दैट इज ऑलरेडी वी डोंट हैव मनी टू पे। ये कोई सजेशन नहीं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं। सजेशन ये है कि इसको गर्म करो। ये क्या चीज है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसी में से लिए जाते हैं लोग। और रोल रोटेशन होगा, एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलग से थोड़ी, उसका कोई पर्पस नहीं। अब भाई आगे करके दूसरा भी एक क्वेश्चन चला जाए, ठीक है। तो अगर हमको लिखना है, शायद तुम लोगों ने थोड़ा बहुत लिखा था ना, बाकी लोगों को बता देते हैं। फिलहाल अब इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे क्वेश्चन आया तो अब लिख सकते हैं, है ना। अगर स्टोरी पता है तो लिख सकते हैं। Which question? Third. Discuss the role of Election Commission of India in light of the evolution of Model Code of Conduct. तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसके बारे में? सबसे पहले तो कोट लिख दो। कोट लिख दीजिए, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ सिन। किसका कहना है ये? पता था तुम्हें?
7 सिंस, इसी में नीचे लिख दो गांधी। जहां मौका हो तो अपना पर्सपेक्टिव पहले से दे दोगे ना, तो एग्जामिनर का एक माइंड बन जाता है कि इस इंसान को ये याद है, तो कुछ इस स्टेटमेंट का प्रभाव है उसकी लाइफ पे। ठीक है, अब सेकंड आ जाते हैं, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन is a constitutional body, full stop, right? Election Commission has come into existence a day before the enforcement of the Constitution. That is on 25th January 1950. Showing the significance of the institution towards India's emergence as, inverted commas में लिखो, sovereign democratic republic। सेक्युलर सोशलिस्ट इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1950 की बात लिख रहे हैं। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, हमेशा टू मेंटेन फ्लो इन द आंसर, जहां पे आप खत्म करते हैं उसी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने इस खत्म किया सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो अब हम भाषण देंगे एक दो लाइन का डेमोक्रेसी पर। ठीक है, जिससे सुनने वाले या पढ़ने वाले का थॉट की कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वी विल राइट अबाउट डेमोक्रेसी, और कुछ बड़ी बात लिख दो। ठीक है, तो यू कैन से दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया is a unique experiment because it is not just about choosing the representatives, rather empowering the masses to play role in shaping their destiny. Full stop, right? Needless to say, right, vote is most, right to vote is the most powerful instrument of change. अब नेक्स्ट है, वी विल टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन। तो अपने लिए क्लू लिख लो, टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो फिर लिखते हैं, राइट, इंडिया इज अमंग फ्यू कंट्रीज वेयर election commission has a constitutional status. What is the idea behind giving the constitutional status?
when we say something has a constitutional status, the moment you use this term, it means autonomy. Fine, because the powers, etc., cannot be changed by the executive or legislature. Constitutional status you have written, right? Thus, highlighting the autonomy of the institution that the party in power is not in a position to change just by underline just by ऐसे देखो sheer numbers which they may have, sheer numbers. वो भी एक चांस है ना, चांस के कारण आप कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दें, तो आइडिया इज ऑटोनोमस. ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ. अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया enjoys vast powers of superintendence, direction and control the electoral process, comma, with the objective to ensure free and fair elections, comma, which is recognized as the part of basic structure of the Constitution. Next लिखो, right? Since beginning, Election Commission has taken measures to ensure the sanctity of the process. आप लिखो right. In this context, the experiment of model code of conduct helps us in analyzing the role of Election Commission comma, in the evolution of India's democracy. ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, तो पहले आप डिफाइन करिए व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. फाइन, तो राइट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट is a set of guidelines oblique norms which are prepared in consultation with the recognized
and registered political parties. Right. Thus, it is voluntary in nature with the objective of keeping electoral process trustworthy and harmonious. Right. It also attempts to demonstrate the desire to show high ethical standards in politics. अब हम लिखेंगे evolution. Right. Though model code of conduct is not the original idea of the election commission, comma, it was basically the initiative of state administration in Kerala in the year 1960. Right. In 1962, that is third general elections, election commission directed all state governments to conduct similar exercises for the peaceful and orderly conduct ठीक है. अब ऐसे एक टाइम फ्रेम लिखो. देखो, ड्यूरिंग 60s, right, 60s was the decade when 1960s, 60s में सब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं. 60s is the decade when the idea was taking shape. Next, right, in 1968, Election Commission proposed a document titled, write the name of the, write the title, Role and Responsibility of Political Parties During Elections. Colon करके लिख दो. Colon, an appeal to political parties for observing
minimum code of conduct during election फुल स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है मिनिमम, अंडरलाइन करो मिनिमम। तो अब जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है फ्रॉम मिनिमम टू वाइडर स्टार्ट होगा कि इसको हम मिनिमम ना रखें, इसे हम बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो अब एक सब हेडिंग लिखते हैं, जर्नी फ्रॉम मिनिमम टू टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अब धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें लिखो ईयर 1979 is a landmark when, अब फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो कॉम्प्रिहेंसिव कोड came into picture। कॉम्प्रिहेंसिव कोड, ये मिनिमम से अब कॉम्प्रिहेंसिव हो गया और इस समय इसका एक शेप आ गया। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कोड इनटू पिक्चर। तो पहले छोटा छोटा स्तर पर किया जा रहा था, अब इसमें लिखो एट द सेम टाइम द आइडिया वाज टू इंश्योर, राइट इनवर्टेड कॉमर्स, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो फ्री भी हो जाए और फेयर भी हो जाए। ठीक है, अब लिखो हेंस सर्टेन न्यू नॉर्म्स to regulate the conduct of parties in power. For example, norms related to the announcement of the new schemes the use of public funds for surrogate advertisements, etc. started। ठीक है, अब रोल हम समझते हैं। ठीक है, लिखो राइट एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन has reflected the broader understanding that governance should not be impacted right, hence in certain cases exemptions have been given keeping election commission in confidence। For example, right, RBI can take, RBI को वो भी परमिशन की जरूरत नहीं, RBI can take
डिसीशंस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि आरबीआई को भी आप एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में देखते हैं. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैन ब्रिंग न्यू लॉज बिल्स जो भी है विथ प्रायर अप्रूवल, कैन ब्रिंग न्यू लॉज विथ प्रायर अप्रूवल. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो, सिमिलरली सिविल सर्वेंट्स कैन do inaugurations rather than the ministers. अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, by this time model code of conduct came to acquire 7 parts. ठीक है. अभी ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो, पार्ट 1 लिखो, मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट to be observed by candidates and parties. कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं. Second, by candidates and parties. Second है with respect to holding public meetings. तो ये ऐसे ब्रैकेट में पार्ट 2 एंड पार्ट 3. नेक्स्ट है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कोड ऑफ कंडक्ट में, इन दोनों में मीटिंग्स प्रोसेशन. नेक्स्ट है कंडक्ट ऑन द डे ऑफ पोलिंग. ये पार्ट 4 एंड पार्ट 5. देन notice of complaints, part 6. Next, means you can complain to election commission. क्या process है? Next is part 7, right? Code of conduct for parties in power. अब एक सब हेडिंग लिखो, जर्नी सिंस देन, a tumultuous journey start, a journey since then. ठीक है. अब लिखो, since restrictions on parties in power emerged, the dispute between the election commission and the ruling parties at union and state also started. अब लिखो, 90s was the decade of activism of election commission, comma, with TN session
at the helm of affairs. Helm of affairs, या hell of affairs, I don't know. At the helm of affairs, HELM, helm of affairs. ठीक है, आप लिखो, right? He took a strong decision to make the exercise more effective. इसको समझो, अंडरलाइन करके, more effective means imposition of model code of conduct from the date elections are announced. Right? This led to the intervention of Punjab and Haryana High Court in Harbans, Harbans, in Harbans Singh Jalal, Harbans Singh Jalal, JALAL, versus Union of India case, versus Union of India and others. Year लिखो 1997, and right, High Court favored the Election Commission so governments, उसमें सब साथ आ जाते हैं, चाहे अपोजिशन हो चाहे कोई, ठीक है, so governments took the matter to Supreme Court under special leave petition. ठीक है, स्पेशल लीव पेटिशन में चला गया मामला. अब लिखो, however the matter got resolved with consensus. In the year 2001, and it was decided that model code of conduct will become applicable from the date of announcement but the gap between announcement and notification should not be more than of 3 weeks. अब ये सब प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है. अब एक और लिखो, what else? Right, by this time the initial enthusiasm was losing the steam. Steam मतलब वो जो एक enthusiasm था वो आ नहीं रहा था. रीजन क्या है? Why? Because of the nature of the model code of conduct. Means first,
right? It lacked statutory basis. ठीक है, तो आप लिखो राइट, hence had more of a, ये वर्ड यूज किया करो ऐसे सिनारियो में, सैल्यूटरी इम्पैक्ट. अगर आप एग्जैक्ट वर्ड, सैल्यूटरी इम्पैक्ट वही है वाइज एडवाइस, विजडम ऑफ काउंसिल या एडवाइस, ठीक है, सैल्यूटरी इम्पैक्ट था. बट यहाँ वाले लोग कहाँ मानने वाले हैं, ठीक है. तो अपने पॉलिटिशियन तो जेल एल से भी आ जाते हैं, उसके बाद फिर वहीं पे वही, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था. तो लोगों में ऐसा लगा कि सब बेकार है. एंड व्हेन दिस पेसिमिज्म कम्स, दैट इज वेरी हार्मफुल. फाइन. So this salutary impact, because it was not actually making the impact, and lot of violation, and election commission also appearing more like a toothless tiger. Fine. अब लिखो, hence election commission itself proposed to give a statutory basis or, if required, inclusion of these principles in RPA itself, make it a part of Representation of People Act. अब लिखो, earlier also Dinesh Goswami committee report had recommended, Dinesh Goswami committee report 1980 has also recommended to give the statutory basis. Means thus a enabling law which gives teeth to bite and thus prevent the harm. The harm. कि लोगों को इमेज खराब हो रही थी कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. देखो, even a bill was introduced but got lapsed. Even the bill was introduced and got lapsed. अब लिखो, gradually the opinion of election commission also changed and consensus has emerged that keeping it as a model code rather than legal code will be a more prudent approach. प्रूडेंट अप्रोच होगी, अकलमंदी की बात होगी. ठीक है. रीजन क्या है? पॉइंट नंबर 1 लिखो, लॉ ब्रिंग्स रिजिडिटी and
judicial process is time taking. तो जो पॉलिटिकल क्लास तो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, इसी बहाने इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब तो जुडिशरी फिर डिसाइड करने लग जाएगी। अब सेकंड क्या है, राइट, कीपिंग इट as a voluntary court give enough scope for firefighting by election commission to deal with any imaginary situation which can crop up or which can emerge. कुछ भी, अब जैसे जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो आप लिख दोगे कि ये है, तो अब मान लो मैनिफेस्टो वाला इशू आ जाए तो वो तो है नहीं, तो अब फिर क्या करना होगा, फिर कानून लाइए, तो कानून तो वो इलेक्शन के बाद बनाएंगे, ठीक है। और इलेक्शन के बाद में भी कहेंगे कि ये वाला हटा के है, वो कहेंगे कि जो नेशनलिस्ट पार्टी उस पर नहीं लगेगा ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए जो ये वर्ड्स होते हैं, इसका भी आप कुछ लिखित उसका कुछ कर, उसका भी कुछ नहीं, अगर आपको गलत करना है तो आप कर ही लोगे। तो जब लिख के गलत कर सकते हो तो बिना लिखा गलत हो तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम लिखा होके गलत नहीं हो रहा है, कम दुख होता है। तो जिसने सोच लिया है भाई, तुमने क्या, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से तो बड़ा नहीं, तो लोग साहस कर लेते हैं, इलेक्शन चीज ही ऐसी है, ठीक है। तो पावर का नशा ही ऐसा है कि आप कुछ भी कर लेते हो, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना। तो जब जीतने की बात आती है, फिर भी जब इंडिया जैसे देश में एक अलग किसी और जगह का इलेक्शन उतना मैटर नहीं करता है, इंडिया में बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इट इज अ फ्यूडल सोसाइटी वेयर पावर इज अ सिंबल, है ना। तो आपके पास पावर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत चीजें हैं, मतलब यहाँ का एक कॉन्स्टिट्युएंसी का एमपी, और ब्रिटेन में पूरे स्टेट और प्रोविंस का एमपी, हम क्यों लड़ लें, हमारे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़, तुम शुरू से हमारे पीछे पड़े हो, हमारा मेंटल पीस क्यों लेना चाहते हैं आप। बस इसीलिए हमको सोक्रेटिस नहीं बनना है, और हम जान पे खेल के पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। हमारी जैसे लोगों की, हमारे जैसे टीचर्स की जरूरत नहीं, पॉलिटिशियन तो छोड़ ही दो। व्हाट आई एम नॉट एलिनेटिंग, बट आई नो what I am fit for, right? And I am fit for lectures, ठीक है, लेक्चर बाजी पसंद है हमें। You will take, I am preparing you ना, you will become collectors and then minister and then secretaries, take action। हर इंसान पॉलिटिक्स में चला जाएगा, तो पढ़ाने के लिए कौन बचेगा अब। यस, ये तो भैया रोजी रोटी के पीछे पड़े हुए हैं, हम पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे। तो अगर हम खुद जाएंगे तो इतने सारे लोगों को ये सब पता कैसे चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद नहीं जा रहे हैं तो आपके पास इतने सारे लोगों को एक एनलाइटनमेंट तो हो रहा है, और जाके क्या मिलने वाला है, मतलब क्या मिल क्या जाएगा। डू यू थिंक वन पर्सन कैन ब्रिंग द चेंज, नो। क्या मिल जाएगा हमें, मैक्सिमम ये एक स्टेटस मिल जाएगा। तो
अभी भी जो स्टेटस है कोई खराब थोड़ी है ना, तो क्या करना है। मुझे कोई रीजन नहीं मिलता स्ट्रॉन्ग कि भाई हम पॉलिटिक्स में चले जाएं। पूजा सर को हमारी शुभकामनाएं कल के लिए भाई, हमारी फ्रेटर्निटी से आते हैं, छोटे भाई हैं। हाँ वो अच्छे इंसान है भाई, शायद चल रहा हो, है ना, तो नहीं कोई बात नहीं भाई, अच्छे इंसान है, मित्र रहे हैं, कलीग रहे हैं, फ्रेंड रहे हैं, हैं? हाँ हाँ के ना, हम तो कहते हैं पढ़े लिखे लोग आए, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, लेकिन हम आएंगे तो लेक्चर कब देंगे, पार्लियामेंट में तो कोई सुनेगा नहीं, स्पीकर से परमिशन लेके, वो भी 2 मिनट का, उसमें वो कह देंगे बैठो बैठो बैठिए बैठिए, तो इससे बढ़िया यहाँ पे चल रहा है ना, तो आई एम नॉट फिट फॉर बीइंग अ पॉलिटिशियन, ठीक है। चलो अब हम कहाँ पहुंचे, ऑन फ्रीबीज। एक्शन ही तो नहीं ले रहा है, एक्शन लेने के लिए इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है, लेकिन इवन इफ इंस्टीट्यूशन इज इंडिपेंडेंट, then also it is not necessary that they will take action, because आज ही हम, I don't know in your class we were doing institutionalism, but वो अभी खत्म नहीं हुआ, because there is lot that happens behind the curtains, and there are many informal rules by which politics governs, तो इसलिए हर चीज में जो आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि वेदर टीएन सेशंस मोटिव वाज जस्ट डूइंग द ड्यूटी, बिकॉज आफ्टर दैट ही brought a party also, and then it brought disrepute, because he was doing with certain intention to build the image, इसीलिए आई डोंट वांट टू डू ऑल these things कि लोग सोचे मैम पढ़ा रही थी इमेज बिल्डिंग के लिए, क्योंकि आई थिंक आई गेट सेटिस्फैक्शन इन व्हाट आई एम, ठीक है। तो अगर टीएन सेशन खुद की पार्टी नहीं बनाते और इलेक्शन नहीं लड़ते, तो उनका जो रेस्पेक्ट बाद में खत्म हुआ वो नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि अब लोग कॉन्सिक्वेंशलिज्म से जोड़ दे रहे हैं, हाँ, तो जो भी आप पॉजिटिव सेंस में याद करते तो हैं, लेकिन जैसे जब हम लोग इस उम्र में थे या तब तब काफी उनका उस था, लेकिन हमने टाइम देखा है जिसमें लॉट ऑफ आर्टिकल्स केम क्रिटिसाइजिंग हिम कि भाई इनका रियल इंटेंशन जो है वो ये था, वो इस इंटेंशन से कर रहे थे, तो आई डोंट थिंक दैट वाज अ वाइज डिसीजन, and I don't think that every you people like you contribute to nation building in many roles, fine, and I don't think there is any role better than a teacher's role, fine, तो टीचर या बहुत तरीके से आप रोल प्ले कर सकते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के ही थोड़ी आप नेशन बिल्डिंग करते हैं, तो मेरा पर्पस तो एनलाइटनमेंट है, मेरा पर्पस नहीं है वो, और यही चीज मतलब टीएन सेशन की लाइफ से भी सीखनी चाहिए, बिकॉज आप लोगों को नहीं याद है उसके बाद जब उन्होंने पार्टी ये सब बनाई थी, आप लोग तो तब 5th 6th में होंगे, तो देयर वाज अ ह्यूज क्रिटिसिज्म कि भाई इस इंटेंशन से आप कर रहे थे। फिलहाल अब हम काम पे आ जाते हैं, कहाँ पे आ गए, ओके। तो ये एक है कि भाई कुछ भी एक सिस्टम आ गया, आप इसको वो कर सकते हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो में अंडर आरपीए, अब हर चीज के लिए तो नहीं जाओगे कोर्ट, हर तरीके का केस भी कोर्ट के पास इतना टाइम थोड़ी है कि मेरा 2 रुपया चुरा लिया, मेरा डालडा ले गए, मेरा चीनी ले गए, उसके लिए तो वो बैठे नहीं है, तो वो जो बड़े वाले मुद्दे हैं
like bribery and intimidation. These are already offenses where action can be taken. ठीक है, तो अब next लिखते हैं, लिखो it is not required also, third point, it is not required also because for very serious violations there are provisions in the law both under RPA and IPC और न्याय संहिता. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल तो सेक्शन 123 clause 3, that is appeal on the ground of religion, is a corrupt practice which may lead to disqualification. Next, section 135 clause C of RPA, डैश करके लिखो, ये क्या कहते हैं, सर्विंग लिकर, अच्छा स्लो कर लेते हैं, सेक्शन 135 क्लॉज सी ऑफ आरपीए ये कहता है सर्विंग लिकर ऑन द पोलिंग डे एंड नियर पोलिंग बूथ इज अ ऑफेंस. एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, सेक्शन 171D of IPC, 171D capital D of IPC, right, impersonation is an offense. तो कई चीजें हैं, जैसे या ये सब ना भी याद रहे आपको, सेक्शन तो नहीं रहेगा, बूथ कैप्चरिंग, इंटिमिडेशन, सर्विंग लिकर, ये सारी चीजें जो है. इम्पर्सोनेशन का मतलब है कि आप उसके किसी और के बिहाफ पे आप वोट डालें और इस तरीके की चीजें. ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी है, इसका मतलब है देयर इज इनफ इन द लॉ. ठीक है, अब देयर इज इनफ इन द लॉ एंड लास्ट क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप उसको इन्फोर्स कराना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन हैज वाइड पावर्स. जैसे सुप्रीम कोर्ट अंडर 142 हैज अ वाइड पावर, सो इलेक्शन कमीशन आल्सो हैज वाइड पावर अंडर 324 and no one stops them, they can do anything. Fine, so if required, election commission can approach to the court and court can bring the directives and then it becomes enforceable, and otherwise if you do not follow the court's directive it becomes contempt. तो existing mechanism में ही इतना कुछ है कि statutory की जरूरत नहीं है, cost benefit analysis में स्टैट्यूटरी से शायद नुकसान ही है. ठीक है, तो एक लास्ट क्या लिख सकते हैं, अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन हैज वास्ट पावर्स टुवर्ड्स सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, comma, it can approach to the court, it can approach to the court. अब यहाँ पे टेक्निकल इशू क्या है,
टेक्निकल इशू ये है, ये तो मॉडल है ना, ये वॉल्यूंट्री है, तो इसका वायलेशन कोई ऑफेंस तो नहीं है अदर देन जो इम्पर्सोनेशन ये सब जो लॉ में है। लेकिन फिर भी इसका वायलेशन, इसको आप ऑफेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शन is a part of basic structure. Rule of law is a part of basic structure. तो अगर जुडिशरी चाहे तो जुडिशरी गोस फॉर ना क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, तो ये बेस को लेकर के कोई भी चीज इसके अंतर्गत आ सकती है और इलेक्शन कमीशन अप्रोच कर सकता है। तो अगर नहीं भी है और आप ये कहें मॉडल इज नॉट जस्ट मॉडल, बिकॉज दिस इज अ वेरी वाइड आइडिया और फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेवल प्लेइंग है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है लास्ट लाइन? अप्रोच टू द कोर्ट बिकॉज court itself has declared rule of law and free and fair elections as a basic structure. डेमोक्रेसी है बेसिक स्ट्रक्चर, राइट टू इक्वालिटी है बेसिक स्ट्रक्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसके सब में आप जा सकते हैं, कैसे भी जुडिशरी उसको एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, अब लिखो राइट, हेंस एज ऑफ नाउ this debate has lost the significance. Next paragraph, right, the model code of conduct in India has been a work in progress. ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में लिखो, ऐसे लिखो, एज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, comma, political climate in the country is evolving, campaigning practices are changing, there is a constant evolution. अब लिखो, there have been occasions when election commission comma, civil society and judiciary has come together to strengthen the credibility of electoral process. ठीक है, अब लिखो, राइट, फॉर एग्जाम्पल in Subramaniam Balaji case 2013, सुब्रमण्यम बालाजी केस 2013 मतलब वर्सेस तमिलनाडु था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड to regulate the manifestos
रेगुलेट मैनिफेस्टोज। तो रेगुलेट मैनिफेस्टोज में लिखो क्या करना था, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज शुड ऑल्सो clarify the source to fulfill the promises. अदरवाइज एक्ट ऑफ ब्रीच भी है और इंड्यूसमेंट भी है, ठीक है। तो ये अब इसमें लिखो अकॉर्डिंगली पार्ट 8 has been added, part 8 has been added in the model code of conduct related to manifestos. अब नेक्स्ट लिखो, इन 2019 इलेक्शन कमीशन डायरेक्टेड that political parties cannot issue election manifestos containing the ideals which are contrary to the constitutional ideals. Next paragraph. Election Commission has also kept track to update the model code of conduct in light of technological changes. ठीक है, लिखो राइट पॉइंट 1, द लॉन्च ऑफ e-vigil ऐप, e-vigil VIGIL, e-vigil app for faster actions. जैसी कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम पैसा मांगो ना दे, सीधे बता दो कि दोस्त को दिया हमको नहीं दे रहे, इट इज अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। हालांकि पैसा लेना भी इलेक्टोरल ऑफेंस है, सोच के देना वहां पे जाके। पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा गया कि भाई 2019 तक माहौल जो था वो बहुत ज्यादा इस तरीके का हो गया था, कम्युनल या इस भाषा का उपयोग, तो इसलिए हेट स्पीच एंड ऑल ये सब क्या, तो ये सब चीजें चल रही थी, तो इसलिए कहा गया कि मैनिफेस्टो में मान लो तुम कहो ये मंदिर तोड़ देंगे, वो मस्जिद तोड़ देंगे, ये करेंगे, ये बनाएंगे, तो ये सब चीजों को थोड़ा रिस्ट्रेन करना है, तो ये किया गया। मैनिफेस्टो में आप ऐसे वायदे ना करें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के खिलाफ हो। यस, नहीं प्रोसेस तो कुछ नहीं है, प्रोसेस तो इलेक्टोरल रोल कंडक्ट मतलब व्हाट, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है। एलिगेशन ये है कि इतने नए वोटर्स कहाँ से आ गए और इतने सारों का इतनी जल्दी आपने वोटिंग इतना एफिशिएंसी कैसे लाया है, भारतीय प्रशासन से इतनी एफिशिएंसी एक्सपेक्टेड नहीं, तो वही तो करेक्ट की बता दीजिए, वरना इसमें हम टेक्निकल नहीं बता सकते कि इलेक्टोरल रोल, वो तो बस वही कह रहे हैं ना कि मतलब टेक्निकल समझाने का कुछ नहीं है उसमें। कांग्रेस पार्टी का तो फंड ही ईडी ने ट्रांसफर कर दिया था 60 करोड़,
कि आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि इनकम टैक्स भाई ये एग्जेम्पशन है, कांग्रेस वाले बेचारे रह ही रहे हैं, बड़ी बात है देश में। चलो कहाँ पहुंच रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी कदम से कदम बढ़ाया जा रहा है। ई विजिल ऐप, सी विजिल है, अच्छा आई डोंट नो, सी इज व्हाट, आई विल चेक, आई विल चेक, मैंने नोट डाउन किया होगा। आप एक और लिखो। तो एक तो एप्स बना रहे, और दूसरा इन्होंने क्या किया, इन लिखो, इन दिल्ली इलेक्शंस, सी विजिल है, सी फॉर कैट, सी विजिल ऐप। किस चीज का? पैसा नहीं, वो रहता है थोड़ा बहुत, जैसे इन काइंड है, आपको ऑल इंडिया रेडियो वीडियो पे कुछ टाइम वाइम मिल जाता है, तो इसलिए मेन मुद्दा तो वही है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। सी स्टैंड्स फॉर सिटीजन्स विजिल, ओके, सी मीन्स सिटीजन। ऐसा कुछ है नहीं ना, जो रिकॉग्नाइज्ड एंड पार्टीज हैं उनको टाइम एक दिया जाता है, तो नेशनल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टी लेवल की हैं, जो भी उनके लिए अलग अलग टाइम एक सिस्टम है, बट वो नेग्लिजिबल है ना। क्या? हाँ हाँ, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है टू प्रिजर्व योर हेरिटेज, ठीक है, वो हेरिटेज प्रोटेक्शन है। और कंपोजिट कल्चर तो तभी होगा कि जब केवल मॉस्क होगी, तब कैसे, जब मॉस्क और टेम्पल दोनों होगा तब जाके कंपोजिट कल्चर होगा। तो कंपोजिट कल्चर और सेक्युलरिज्म के लिए सब जरूरी। ठीक है, अब आगे चलो। तुम लोग, ये सब लाइव चल रहा है, जो चुपचाप अपना काम करके खत्म कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए हमें प्रेरित ना किया जाए। Yes, in Delhi elections, election commission has done what? Has made certain new regulations for AI generated ads. Regulations for AI generated ads. मतलब डिक्लेरेशन कर दीजिए कि AI जनरेटेड है, ठीक है, या डीप फेक्स और ये सबसे संबंधित जो है। और क्या, वो तो पंचायत वाला स्टेट देखते हैं ना, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी स्टेट। नहीं, पंचायत के लिए तो आई डोंट नो, स्टेट इलेक्शन कमीशन तो इतना कानून देखना पड़ेगा, आई हैव नो आइडिया, मतलब ऐसे नहीं बता सकते इतने फैक्ट्स। हाँ हाँ, होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत क्यों नहीं होते। नहीं, पंचायत जो रूरल एरिया बहुत है, उस पर डिस्कशन ना करो, ठीक है, आप इसको खत्म कर लो। तो ये सब काम किए जा रहे हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट लिखो, राइट। तो ये रोल हो गया इन द इवोल्यूशन, मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव, फॉर्मल, वर्किंग विथ जुडिशरी एंड सिविल सोसाइटी। लेकिन देयर इज ऑल्सो सम क्वेश्चंस, ऐसे कर सकते हैं, तो कंट्रोवर्सीज भी हैं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं, लिखो, बिसाइड्स strengthening the model code of conduct, comma, often election commission has come under criticism for the lack of
effective action against the violations of Model Code of Conduct तो पहले जब वायलेशन होता था तो डिबेट ये होती थी कि इसे स्टैट्यूटरी बेसिस दे दिया जाए, लेकिन अब ये लग रहा है कि इसका काम नहीं है, अब इसका है कि इसको ऑटोनॉमस बनाना होगा। ठीक है, तो अब इसमें लिख सकते हैं, लिखो राइट, वंस इन सच सिनेरियोज द सजेशन वाज to give a statutory basis but in present times the suggestion is to strengthen the autonomy of the institution. अब लिखो, from time to time election commission itself has made recommendations for example in the year 2016 election commission recommended that the system of removal of the other two election commissioners should be made at par with CEC. तो आर्टिकल शायद 325 है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जज के एट पार है, लेकिन बाकी दोनों का नहीं है। तो अब ये जो लॉ नया आया भी है उसमें कोई चेंज इस कॉन्टेक्स्ट में किया नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं, इन अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू क्रिएट अ सिलेक्शन कमेटी, नहीं सिलेक्शन वो तो सर्चिंग कमेटी इसमें डाला है ना, टू क्रिएट अ सिलेक्शन कमेटी राइट बाय इंक्लूडिंग leader of opposition and CJI along with Prime Minister for the purpose of appointment अब next लिखो, however the government has made certain modifications by bringing the law where CJI has been replaced with Minister of Cabinet rank। ये भी तो मैटर अभी सब जुडिस है, तो मैटर इज सब जुडिस।
फिर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स लाइक मिलन वैष्णव, experts like Milan Vaishnav, the bigger issue is to address the money and muscle power, role of money and muscle power in the elections. इसका मतलब है it means that peaceful, नहीं, it means that piecemeal reforms, piecemeal, थोड़े थोड़े नहीं, piecemeal reforms may not be enough, and a wholesale social engineering will not be enough, छोटे छोटे नहीं, a wholesale social engineering may be required. फिर लिखो till then, bye bye, ठीक है, लिखिए till then we have to rely on ethics to address the problem of politics. देखो, to quote Dr. Bhimrao Ambedkar, no constitution is perfect, and the ultimate protector of the constitution is constitutional morality. Protector of the constitution is constitutional morality. और constitutional morality क्या है, लिखो लिखो persons in position of power will have to adhere to the principles of rule of law. इसको वो अब ऐसे लिखते हैं, that is they have to have reverence for the constitution. They have, उनको क्या होना चाहिए, they have to have reverence. Reverence means they have to have love for constitutionalism, extreme love and respect, and then only you can protect constitutionalism, because what he held that democracy is still a topsoil. Fine, so it is a topsoil, and till the time constitutionalism becomes India's, like it gets ingrained in India's political culture, it has to be very systematically and carefully nurtured, because what he again held that on the occasion when he held that now there are British to put the blames, but when there will be no British, whom are you going to put the blame? Fine. So, and now we have already been slaves for number of times. So this time, if you will not learn again, so this will, like, the blame, you will have to take the blame. And Karl Marx has once said that history repeats itself, first time as a tragedy and second as a farce. And this essay was also asked in UPSC. ठीक है, तो अब इसके बाद कितना सिखाओगे, कितना पढ़ाओगे, कितना समझाओगे और किसको बताओगे, ठीक है,
इसलिए किताबों की दुनिया में रहिए, कॉपी किताब में लिखिए, खत्म करिए। बाकी बड़े बड़े लोग हैं, सब जानते हैं क्या सही क्या गलत। हम लोग किताबी बातें करते हैं, ठीक है। सो वी आर द पीपल ऑफ क्लासरूम्स and the real politics is very different and we don't know what works. हम लोग तो कहानी किताबों के किस्से कर रहे हैं, अब रियलिटी क्या है, इसीलिए जिस फील्ड को जानते ही नहीं हो उसमें घुसो क्यों, ठीक है। प्लेटो से शिक्षा लो भैया, पॉलिटिक्स की जगह पढ़ाई में चले जाओ। तो ये जो किताबी ये सब कहानी पूरा डिस्कशन है, ये सब किताबी है, ठीक है। अब इसका क्लासरूम और एग्जाम से बाहर क्या रेलेवेंस है, दैट आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन India is a mother of democracy. We talk at international platforms. With the purpose is we want to show that we have not learned democracy from USA. And India as a mother of democracy is to preserve India's strategic autonomy, that we have our own democracy. डिस्कोर्स तो सब कुछ है, डिस्कोर्स और नैरेटिव तो सब कुछ है, आप लोग भी डिस्कोर्स ही। अभी हमें ये क्या पता हम लोग रियल हैं या हम लोग रियल नहीं है, हमें क्या पता कि वी आर ड्रीमिंग और वी आर नॉट ड्रीमिंग। तो ये सर्टेनिटी से कह सकता है हम लोग इस समय जग रहे हैं, कह सकता है। आप इस समय सपने में हैं या आप रियलिटी में हैं, आप कह ही नहीं सकते कभी। सपना रियल, जो आप सपने में हैं जिसे आप सपना कहते हैं वो रियल है। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, ये रियल है या ये सपना है ना। और इस बात का डिसीजन कौन लेगा, कौन डिफाइन करेगा कि इट इज अ ड्रीम और इट इज अ रियलिटी। इतना बड़ा नहीं तो छोटा तो हो ही सकता है, ड्रीम हो सकता है, ड्रीम आपको कुछ आप हो सकता है आप पूरा पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सपने में भी पढ़ लें, और संभव है अगर इलेक्शन की किताब नीचे रखिए तकिए में। Yes. So we don't know what is false consciousness, what is real even I don't know. I am taking the class in reality or I am in my dreams and chalo, and I don't know. ऐसे करो अपने को, ठीक है। We don't know, ठीक है। So I think इतना काफी है आज के लिए, है ना। पता नहीं, we'll meet, अभी 2 टॉपिक और अपने रहते हैं इसमें, disqualification, and I think we'll not be able to cover more than this. तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय प्रजातंत्र, जय इलेक्शंस, भारत माता की। मेरे अरे भगवान, किससे? ड्रीम में तो नहीं है, सामने वाले से पूछो कि मैं सपना देख रहा हूं कि मैं हकीकत में हूं, ये चीज आप डिसाइड नहीं कर सकते। यू आर लिविंग द ड्रीम, है ना। यही तो फिलॉसफी के मजे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इंटरेस्ट।